Hi guys, welcome to another episode of Lawflix, and in this episode we are going to discuss the movie Hurdang. Now the movie is pretty appropriately named since it revolves around the chaos that was created after the reservation for other backward classes was approved. So that is what the entire movie premise is based upon. But like I have said before, we are not here to review a movie, we are here to review the law in the movie. So let us begin. Now, the movie is obviously based on a 30-year-old premise where the government or the then Prime Minister, Mr. VP Singh, decided to implement the recommendations of Mandal Commission. Now, what exactly was Mandal Commission? Mandal Commission was one of several commissions that came to identify the other backward classes and the quantity of reservation that these classes required. मंडल कमीशन अकेला कमीशन नहीं था जो कि ओबीसी आइडेंटिफिकेशन और रिजर्वेशन पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. इससे पहले कुछ और कमीशंस भी आ चुके थे, पर अपनी किसी फॉल्ट की वजह से वो फेल हो गए और उनके रिकमेंडेशंस भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाए. लेकिन मंडल कमीशन became a historic thing because the recommendations of मंडल कमीशन were implemented. और जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन देश में फैला, एक बहुत ही बड़ा chaos क्रिएट हो गया, क्योंकि जो रिजर्वेशन फर्स्ट अमेंडमेंट में मिला था, the amendment that provided for reservation to SCs and STs, that reservation also was very not well received. राइट, उसको भी लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया था. हम मेहनत कर रहे हैं और हमसे कम मेहनत करने वाला कम मार्क्स लेकर हमारी पोजीशन ले सकता है. दिस नेवर वेंट वेल विद द masses, and when an additional reservation, that to a 27% reservation, was given to another class, it was obviously very chaotic. Moving on, so let us discuss the historical background of the commission or the commissions that were constituted to identify OBC and give them the reservation. Kelkar Commission, that was constituted under the government of Jawaharlal Nehru in 1953. The commission submitted its report after 2 years, and they identified or they provided a list of about 23 or 2400 backward classes, right, or communities, and 837 of them were identified as most backward. Now back then this reservation could not have been provided because they just came up with the first amendment which provided for SC and ST reservation. अब इसी reservation ने chaos create कर दिया था. अगर केलकर कमीशन की recommendations को implement करके SEBC को भी reservation दे दिया जाता तो लोग उतने अच्छे से इसे accept ना करते, और जो chaos पहले ही संभालना मुश्किल हुआ था वो बिल्कुल out of control हो जाता. और इस वजह से केलकर कमीशन के recommendations को पहले तो implement नहीं किया और इसको फिर deconstitute ही कर दिया obviously. Then we had Mandal Commission which came in 1990, and it came under the government of Mr. VP Singh. He was the Prime Minister back then. और Mandal Commission के जो recommendations थे उनमें से they identified certain backward classes, and one of their major recommendation was that 27% reservation to socially and educationally backward classes, otherwise known as OBCs, should be given, and that reservation should be enough for these communities. Now the problem was that the 27% reservation to OBCs was given at a central level. Mind you, obviously if parliament is coming up with a law, it will be central in nature. So 27% reservation to OBC communities would be given on a central level, and under the provision of the constitution, even states can recognize and identify the socially educationally backward classes. That is what the first amendment did, gave state the power to do it, and they could also provide them with reservation. So they were getting reservations on both platforms, central and state. Now this
was obviously a problem, like I said, created a huge uproar in the Indian masses. So the announcement, like I said, witnessed violent protests all over India, especially northern and western India. वो इस reservation को accept करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि northern और western India में ही सबसे ज़्यादा other backward classes हैं, और ये reservation उन्हीं areas में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा था और एक सर्टेन प्रिविलेज ऑफर कर रहा था इन कम्युनिटीज को, जो बाकी जनरल कैटेगरीज एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए यूपीएससी, पीसीएस एटसेट्रा के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनका एडवांटेज एकदम से खत्म हो गया है. क्यों? क्योंकि ये रिजर्वेशन उन्हें कभी सीट पाने ही नहीं देगा. And that is what the movie also tells us. There is this guy who wants to become an IAS officer, but he doesn't want to become just for the sake of it. He wants to become an IAS officer so that he can marry his girlfriend. Now, like I said, not discussing the movie, so let's not, or else I'll get carried away. Now, the Mandal Commission, obviously, the implementation of Mandal Commission and the recommendation of Mandal Commission were challenged. How could they go unchallenged, right? So the case in which Mandal Commission was challenged is called Indra Sawhney versus Union of India, also known as Mandal Commission case. ये बहुत important case है और ये लगभग हर एग्जाम में हर साल किसी ना किसी लॉ एंट्रेंस टेस्ट में, किसी ना किसी जुडिशरी के टेस्ट में पूछ ही लिया जाता है, right? So this is called Mandal Commission case or Mandal case, and the 27% quantification of reservation was approved by the Supreme Court. The Supreme Court said that 27% reservation to the other backward classes is constitutional and should be allowed. But apart from this, or along with the reservation, they came up with other concepts so as to appease the masses, and the concept was creamy layer. So they came up with the concept of creamy layer, which said that even among OBCs, a certain group earning above a certain window, for example, let's say we have OBC community. Now OBC community will be divided on the group of income 5 lakh and above, right? Or 2 to 5 lakh, or 1 to 2 lakh, less than a lakh, right? एक ऐसा इनकम ग्रुप जो काफी अच्छा पहले से ही कमा रहा है, उसको गवर्नमेंट से किसी भी बेनिफिट की जरूरत नहीं है. वो ना तो सोशली बैकवर्ड होंगे, ना ही वो एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे. तो भले ही कास्ट की वजह से वो एक अदर बैकवर्ड क्लास में आइडेंटिफाई हो जाएं, लेकिन उस बेनिफिट को वो डिजर्व नहीं करते, और इसी कैटेगरी को क्रीमी लेयर कहा गया. तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो सेंट्रल लेवल पे, और अगर स्टेट देना चाहे तो वो दे सकती है. सेंट्रल लेवल पे उस क्लास को बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिलना चाहिए. That was what Supreme Court said. Another thing that they said was कि किसी भी सूरत में आप कोई भी रिजर्वेशन दे. अब 3 तरह के रिजर्वेशन हो गए कंट्री में. कौन कौन से? SC प्लस ST प्लस OBC, राइट? PWD का भी रिजर्वेशन था, but that is another kind of reservation. Now SC, ST, OBC को टोटल मिला के रिजर्वेशन की क्वांटिटी 50% से ज्यादा नहीं जाएगी. मतलब आप तीनों क्लासेस को रिजर्वेशन देने के बाद भी रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन को 50% की सीलिंग तक ही रखेंगे. तो आपको कैसे डिवाइड करना है आप ये देख लीजिए. ओबीसी का रिजर्वेशन 20%, 27% सेंटर से ऑलरेडी एलोकेटेड है. अब 50% में से 20% ऑब्वियसली चला गया है कैटेगरी को, बाकी का बचा हुआ 22% तुम 23% आपस में डिसाइड कर लो, ठीक है? तो दैट वाज द एलोकेशन. किसी भी इन एनी सिचुएशन द रिजर्वेशन और द लिमिट ऑफ reservation should not exceed beyond 50% in the state or at the center. सेंटर पे तो जाएगा ही नहीं, स्टेट में भी नहीं जा सकता. बट देयर वॉज अ प्रोवाइजो अटैच्ड. क्या? कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है और स्टेट को ये 50% सीलिंग
एक्सीड करना पड़ रहा है तो वो पहले इसका जस्टिफिकेशन देंगे और इस जस्टिफिकेशन के बाद वो 50% का सीलिंग एक्सीड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जो इस 50% को ब्रीच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उस ब्रीच को चैलेंज भी किया गया है, कुछ अपहोल्ड किए जा चुके हैं और कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जा चुके हैं। So let's discuss or get to know about the breaches that state governments have committed over the years. So despite the judgment, the 50% ceiling has been breached by several states, and few of them are Maharashtra, Telangana, Tamil Nadu, Haryana, Chhattisgarh. Now we are only discussing few instances jahan pe the breach was challenged and was declared unconstitutional also. Tamil Nadu breach or Tamil Nadu reservation, the total reservation in the state government jobs goes over to 69%. But this has been justified by the state government, and the Supreme Court also has held that this is not unconstitutional, and the circumstances existing in Tamil Nadu give them a leeway so that they can give such hefty reservation. तो ये challenge हो चुका है और ये uphold भी किया जा चुका है, upheld. Now we have the other reservation which was challenged in Andhra Pradesh, and it came with a very famous case, very recent also, the decision of which came out in the year 2020. Okay, so the name of the case was Shebrolu Leela Prasad, I think it's an engineering college, versus state of Andhra Pradesh. Now this was a very interesting case, and the governor's order provided 100% reservation to scheduled tribes. अब ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर के ऑर्डर से किसी भी कैटेगरी को 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए। लेकिन एक गवर्नर ऑर्डर में, एक गवर्नर नोटिफिकेशन में, गवर्नर भी ऑर्डर और नोटिफिकेशन दे सकते हैं, बाय द वे, not discussing that. Anyhow, so the governor, using his powers given to him by the Indian Constitution, provided 100% reservation to the scheduled tribes. Now this, obviously this was a huge issue and it was challenged over and over again. Finally in the year 2020, the Supreme Court held this reservation to be unconstitutional and the governor's order was removed. Then the latest one that we are going to discuss in a little bit more detail is the Maharashtra reservation, which led to an amendment. So the Maharashtra Reservation Act of 2018 provided a special reservation to the Maratha community. Now, there was a commission that was headed by retired Justice N. Gaikwad, and he recommended that Marathas should be given a reservation under OBC. And that reservation or that recommendation was approved by the state government, and the Marathas were given 16% reservation in Maharashtra. इस reservation को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, and the high court held that the reservation is constitutional but they reduce the quantity. तो 16 से डिक्रीज करके 12% का reservation, 12 to 13% का reservation अलाउ कर दिया। 12% गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 13% गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसे ही मराठा reservation picture में आया, as soon as Maratha reservation was upheld by the High Court, the central government came up with an amendment, and that amendment was 102nd amendment. Through this amendment, they took away the state government's power to identify any class as an other backward class or socially, educationally backward classes. They reserved the power to the president and the president only. And we all know that president cannot work without the aid and advice of the Council of Ministers. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो अपनी स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें रिजर्वेशन दे सकें, राइट? अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 102nd अमेंडमेंट से वापस ले ली कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई करेगी, प्रेसिडेंट के थ्रू लिस्ट रिलीज की जाएगी, giving the identity of those classes which central government will recognize as socially and educationally backward classes.
और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो कम्युनिटीज या जो क्लासेस सेंट्रल ने रिकॉग्नाइज की वो तो रिजर्वेशन के एम्बिट में आ गई, लेकिन वो कम्युनिटीज जिन्हें सिर्फ स्टेट रिकॉग्नाइज करता था एज अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड दे वर नॉट गिवन एनी रिकॉग्निशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे लॉस्ट देयर रिजर्वेशन एंड द नंबर ऑफ कम्युनिटीज दैट लॉस्ट रिजर्वेशन ड्यू टू दिस वाज मोर देन 6,000. Now again this created a problem. Obviously these were the changes that were made. So article 338B constitutionalized or made National Commission for Other Backward Class a constitutional body. Previously it was not a constitutional body, just a statutory body, but article 338B was incorporated or added in the constitution, which made NCBC a constitutional body. Article 342A was added, which mandated that Parliament's approval is compulsory before adding or deleting any community for the purpose of giving reservation or for the purpose of socially and educationally backward class identification. Okay? For a state or union territory. तो स्टेट के पास अब खुद पावर नहीं है। अगर सेंट्रल तुम्हें सेंटर कहता है कि हाँ चलो ये है, इसको दे दो रिजर्वेशन, तो तुम दे सकोगे, वरना नहीं। जैसे ही 102nd अमेंडमेंट आया, मराठा रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि जब सेंटर ने रिजर्वेशन स्टेट के लेवल पे कैंसिल ही कर दिया है तो मराठास को रिजर्वेशन मिलेगा कैसे। अब जैसे ही वो कैंसिल हुआ, अगेन शोर मच गया एंड दिस अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड, बट द चैलेंज केम फ्रॉम बोथ साइड्स. The amendment, 102nd amendment was challenged along with the Maratha reservation. Now in the Supreme Court, the court held that 102nd amendment is valid. They upheld the validity of this amendment, but they did not uphold the validity of Maratha reservation. They declared कि Maratha reservation unconstitutional है, लेकिन 102nd amendment valid है, और इस तरह से मराठा रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म हो गया. The obvious premises were these कि भाई in Maharashtra there exists no extraordinary circumstance which provides a pathway for Maratha reservation. किसी तरह का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस नहीं है जहाँ पे मराठास को रिजर्वेशन देना चाहिए. प्लस 50% का सीलिंग क्रॉस हो रहा है ऑब्वियसली, और इस सीलिंग को क्रॉस करने का मराठा गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है. दूसरा, स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिजर्वेशन दे सकें, क्योंकि 102nd अमेंडमेंट ने अब इसको इम्पॉसिबल कर दिया है. तो आपके पास पावर नहीं है, आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस भी नहीं है, तो आप क्यों देंगे रिजर्वेशन. तो मराठा रिजर्वेशन वेंट आउट ऑफ द पिक्चर. ऑल्दो 102nd amendment will nullify, and not nullify per se, NCBC will continue to be there, but the central government will come up with one more amendment, and it will once again recognize states' power to identify SEBC. The bill has been proposed, it is yet to be passed. वो पास हो जाता है तो states की power restore हो जाएगी. क्या मराठा reservation उसके बाद आएगा? Well, that is something that we are not concerned with. I hope you learned something from this session. Keep watching, keep learning. Thank you so much.